Good evening to all of you. Is this audible? All clear, visible? All clear, audible, visible? गोटे बहुत इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अच्छी समस्त जदि कौन सी क्लास रे कहीं किसी वैल्यूएबल फीडबैक दबाक चाहते ताले लिंक अच्छी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायथिबा लिंक को यूज करी आपण माने आपण मानको फीडबैक दे पारे. इज दिस क्लियर? बुझी पारले? सो एनी रिलेटेड टू एनी क्लास आपण आपनकर फीडबैक दे परिबे एंड डिपेंडिंग ऑन योर फीडबैक देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन द क्लास. ठीक अच्छे, ऑल क्लियर? सस्मिता वेरी गुड इवनिंग. प्रणाम प्रीति, प्रणाम लिक्कू, नमस्कार नमस्कार समस्त को वेरी गुड इवनिंग. सो टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस वीक. ए वीक रो लास्ट क्लास. अगेन वी विल रिज्यूम इन द नेक्स्ट वीक रे पुणी आमे क्लास स्टार्ट करिवा. ठीक अच्छे, नेक्स्ट वीक रे पुणी आमे किछि इंपोर्टेंट क्लास स्टार्ट करिवा. किछि डाउट काली रो क्लास ऊपर गत काली जो जो टॉपिक आमे डिस्कशन करिथिले सेथुर किछि डाउट काहाकू किछि प्रॉब्लम, एनी डाउट? आई होप देयर इज नो डाउट, किछि प्रॉब्लम नाही काहाकू. ठीक अच्छे. सो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आमे आसीबा. आज बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी डिस्कशन करबा आमे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो आई होप इवोल्यूशन ऊपर क्लास समस्त करिसंती एंड एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस टॉपिक. ये टॉपिक ऊपर क्लैरिटी अच्छी समस्त. ठीक अच्छे. तो क्वेश्चन को आसीबा. आर यू रेडी? स्टार्ट करिवा क्वेश्चन. स्टार्ट करिवा क्वेश्चन. अच्छा, first consider the following statements. India's pre-colonial economy, it was largely self-sufficient with flourishing handicraft industry. The structure of Indian economy changed significantly post-British colonial rule, leading to increase in dependence on agriculture. A, one only. B, two only. C, both. D, neither. देखि पार्टन समस्त मु साइड हे जाउची, इजिली देखि परिबे. प्रीति बोथ. ओके, अन्य माने अदर्स? समस्त कहतु, समस्त कहवा चेष्टा करेंगे. ये बहुत सहज क्वेश्चन, किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, समस्त कहि परिबे. सो क्वेश्चन कहूँ कि इंडिया रा प्री कॉलोनियल इकोनॉमी इट वाज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट विथ फ्लोरिशिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. यस और नो? से समय को इंडस्ट्री एग्जिस्ट करूला? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एग्जिस्ट करूला, हां कि नहीं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एग्जिस्ट करूला. ठीक अछि. एंड इट वाज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट ना हमें इंपोर्ट करिया पड़ता? नो, इट वाज मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट. So demand, inside demand, it was supported by the inside supply. So कौन कहले? inside demand equals to inside supply, है ना? ठीक अछि. तो self sufficient थिला इकोनॉमी. Then structure of Indian economy, it was changed significantly post British colonial rule. So there was more dependency on agriculture. Colonial rule परे इटा increase थिला. True or false? डिपेंडेंसी बढ़िला, हाँ कि नहीं? डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर ऊपर कॉलोनियल टाइम पीरियड टू बढ़िया लगिला. कहीं ना ब्रिटिशर मानकर एक्सप्लोइटेटिव एग्रीकल्चरल सिस्टम. किसी एग्जांपल दे परिबे एक्सप्लोइटेटिव एग्रीकल्चरल सिस्टम ऊपर जो टैक्सेशन सिस्टम थिला, एग्रीकल्चरल टैक्स, एगुडा को एक्सप्लोइटेटिव थिला कि नहीं? एक्सप्लोइटेटिव थिला. हिस्ट्री पढ़िथिबे, गोटे सिस्टम पढ़िथिबे तीन काठिया सिस्टम. ये कहि परिबे या पर मते किछि कौन कहले? गोटे सिस्टम पढ़िथिबे कौन ना? तीन काठिया सिस्टम. नाउ दिस तीन काठिया सिस्टम इट वाज एक्सप्लोइटेटिव इन नेचर. यस, एग्रीड? नो, नॉट सिग्निफिकेंटली पोस्ट चेंज जोटा सस्मिता कहूछ. यस, देयर वाज आल्सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. लिखो एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, 3/20 करेक्ट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट.
बट एटा जोटा कहन चेंज सिग्निफिकेंटली पोस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कोड थिला डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ना एबे भी अछि 55% केते कंट्रीब्यूशन केते बा कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट केते 55%। हां कि नहीं सर्विस सेक्टर को लैटर ऑन चेंज होईची केबे चेंज होला 1991 परे एलपीजी रिफॉर्म आसिला परे सर्विस सेक्टर को चेंज होईची मन रहिला समस्त को एटा ये क्वेश्चन आसीबो सर्विस सेक्टर को केबे चेंज होला 1991 परे एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हैला परे ग्लोबलाइजेशन कांसेप्ट आसिला परे यस और नो तो आंसर कोन हो ताले एटी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आमे कांसेप्ट बुझी बुझी के जीवा कांसेप्ट सहित क्वेश्चन करिवा अदरवाइज खाली क्वेश्चन कले किछि वैल्यू नाही कहना जो माने क्लास करि नाहंती से माने बुझ परिबे जल्दी सो पोस्ट ब्रिटिश रूल रे मु कहबी देयर वाज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यस और नो आ गोटे क्वेश्चन मोर देयर वाज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यस और नो यस एब्सोल्युटली यस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थ कोन देयर वाज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यार अर्थ कहि परिबे कि de-industrialization is opposite to de-industrialization is opposite to industrialization this is opposite to industrialization यार अर्थ एटा काहे कोटले ब्रिटिशर माने ना बिकॉज़ से माने इंपोर्ट करिवे इंडिया रु रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइस रॉ मटेरियल नेबे चीप प्राइस रे एवं से माने एक्सपोर्ट करिवे कोन ना फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करिवे कोन ना फिनिश्ड गुड्स एट हायर प्राइस at higher price इति पाई ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to 5-year plans which statement is true the first 5-year plan focused primarily on agriculture and irrigation second plan adopted Manlow's model emphasizing heavy industry which is true एटा को समस्त कहि परिबे फर्स्ट प्लान ने कोन हेतिला एवं सेकंड प्लान ने कोन हेतिला both correct both correct फर्स्ट प्लान ने एम्फासिस कहा को दिया एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वाई एग्रो एंड इरिगेशन इरिगेशन बिना एग्रीकल्चर रो किछि वैल्यू नहीं बिना इरिगेशन ने एग्रीकल्चर रो किछि वैल्यू अछि कि नहीं तो इरिगेशन नो वैल्यू इरिगेशन कले एग्रीकल्चर बढ़ी जिवो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लान ने देयर वाज फूड इनसिक्योरिटी फर्स्ट प्लान नो ऑब्जेक्टिव कोन थिला प्रथम ऑब्जेक्टिव थिला फूड सिक्योरिटी हां कि नहीं फर्स्ट प्लान नो ऑब्जेक्टिव थिला फूड सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स 3A कोन कहली एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स जा को हम 3A बोली कहू हैला देन सेकंड प्लान अच्छा फर्स्ट प्लान ने को मॉडल अडॉप्ट हेतिला फर्स्ट प्लान को मॉडल सेकंड प्लान इट वाज पीसी मालनोबिस मॉडल सेकंड प्लान ने कोन अडॉप्ट करले सेकंड प्लान ने पीसी मालनोबिस मॉडल इट वाज अडॉप्टेड and second plan onwards we have started emphasizing heavy industry को हम एउ टू फोकस करिया को लागले यस हरुद दोमार मॉडल प्रीति वेरी गुड थैंक यू वेरी मच अन्य माने हरुद दोमार लिखु करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट हरुद दोमार मॉडल इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान खुशी लागु कि समस्त मन रखितंती क्लास जहा जहा पढितिला हमें बहुत बढ़िया फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने हरुद दोमार मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान ने किया आसिला मानलोबिस मॉडल हां कि नहीं समस्त एग्रीड अन्य माने जो माने अछन समस्त एग्रीड गुड चले एठी पीएमएफ बोली हमें कहा को डिक्लेयर करले जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें पीएमएफ बोली कहा को डिक्लेयर करले सस्मिता पीएमएफ बोली कहा को डिक्लेयर करले प्रियदर्शिनी इनिशियली इंडिया रे प्राइम मूविंग फोर्स बोली हमें कहा को डिक्लेयर करले कल्पना again we changed it initially we have declared yes agriculture को हमें declare करथिले agriculture was declared as the prime moving force
later on it was changed, correct Preeti, absolutely correct, agriculture declare करथिले, later on it was changed to what, केबे चेंज हला एवं कोठी की चेंज हला, काहे की चेंज हला, when, why, when and why change to agriculture रो हमें चेंज कले कोठी की पीएमएफ को हमें चेंज कले इंडस्ट्री को, why कोन पाई, एग्रीकल्चर रू इंडस्ट्री को हमें चेंज कले कोन पाई, एट बुझौती देखो, 1947 independence, 1991 LPG, then 2002. Now एठी PMF रहिला किए, प्राइम मूविंग फोर्स रहिला किए ना एग्रीकल्चर, हैला एठू धीरे धीरे आसिला कोन ना प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, धीरे धीरे कोन आसिला प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 2002 रे इट वाज चेंज टू इंडस्ट्री, 2002 रे एको इंडस्ट्री को चेंज करा गला, बुझियला कि नहीं, एको इनिशियली एग्रीकल्चर काहे की करा जाइतला, बिकॉज सॉरी अरे उल्टा कहि दिले रे, इनिशियली प्राइम मूविंग फोर्स के थिला, इनिशियली थिला इंडस्ट्री, तापर हला के एग्रीकल्चर, उल्टा कहि दिले देखो, तापर हला एग्रीकल्चर, बुझियला कि नहीं, इनिशियली इंडस्ट्री काहे की ना, इनिशियली इंडस्ट्री को डिक्लेयर करिया पछरे कारण थिला एग्रीकल्चर इज द सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस, कौन कहले एग्रीकल्चर वाज द सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस, यदि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करतंती देन यू विल बी काउंटेड एज अ बैकवर्ड कंट्री, सेथि पई इंडस्ट्री को डिक्लेयर करा गला फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ एग्रीकल्चर 2002 रे काहे की चेंज करा गला ना, 1990s रे ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एमाने कोन डिक्लेयर कले, एमाने डिक्लेयर कले, वर्ल्ड बैंक एवं आईएमएफ कोन डिक्लेयर कले ना, एमाने डिक्लेयर कले agriculture is not a symbol of backwardness, agriculture is not a symbol of backwardness, बुझिला कि नहीं मो कथा कोंतु, एग्रीकल्चर ए समय आउ बैकवर्डनेस रो सिंबल नथिला, सेथि पई हम एग्रीकल्चर को डिक्लेयर कले, क्लियर, एटा लिखि के रखो। सो 1991 रे एठी आसिला कोन कहली, एठी आसिला एलपीजी मॉडल, next the planning commission was established in 1950 to oversee central planning in India, statement 2 it was replaced by NITI Aayog in 2015 to allow for more decentralized planning, बहुत बढ़िया क्वेश्चन टिके देखिए समस्त मन दे कि देखंतु, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मन लगुच कि नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सॉल्व कले और जेते पढ़ सॉल्व करवाटा मैंडेटरी, सॉल्व कले ही क्वेश्चन आंसर हमर क्लैरिटी आसीबो। अमित सी, प्रियदर्शिनी बोथ, ओके समस्त बोथ कहउछन, ऑल बोथ, हां समस्त सी कहउछन, अमित कौन लिखिलो, last class asked you something regarding OCS, unfortunately offline he, no problem Amit, I will take care in the end, you raise your question at the end, ठीक 9:59 में मैसेज ड्रॉप कर दियो, I will check your question and come back, we will discuss, don't worry। स्टेटमेंट 1 ये कुछ प्लानिंग कमिशन एस्टैब्लिश्ड 1950, ठीक अछि ना भूल अछि, ई क्वेश्चन रे फर्स्ट स्टेटमेंट रे दीटा पार्ट अछि, फर्स्ट हला प्लानिंग कमिशन केबे हेतिला, सेकंड होउची कि प्लानिंग कमिशन रो फंक्शन कोन थिला, प्लानिंग कमिशन केबे हेतिला एस्टैब्लिश्ड इन 1950, ठीक अछि, ओवरसी 1950 टू ओवरसी सेंट्रल प्लानिंग इन इंडिया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम पई आसला। स्टेटमेंट 2 ये कुछ नीति आयोग 2015 रे आसला एवं कोन पई डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ताले इटी दीटा कथा फोकस का पर ना 1950, एटा कहूची नीति आयोग केबे ना 2015, यार ऑब्जेक्टिव कोन ना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एटा कोन, दिस इज अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सो 1950 रु चेंज हला के 2015 को एवं एठी सेंट्रलाइज्ड रु चेंज हला कोथरे डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल क्लियर। सो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को नीति आयोग दिला, नीति आयोग रिलेटेड मते गोटिए के कीवर्ड कहबे, इंपोर्टेंट कीवर्ड जोटा क्वेश्चन पचरा जाय, अमित को, खगेश्वर को, कल्पना वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गुड आंसर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
नाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होची गोटी एमती शब्द जहाँ को यूज करा जाए कोथरे ना नीति आयोग रे मन रखिए रिमेंबर दिस टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये ही आसीबो क्वेश्चन ये ही आसीबो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोन या पर यूपीएससी मेंस रे क्वेश्चन आसी सारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऊपर बुझियला सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोन ना सेंटर एंड स्टेट दे विल कोऑपरेट विथ ईच अदर सेंटर एंड स्टेट दे विल कोऑपरेट विथ ईच अदर यस और नो हां कि नहीं एग्रीड ओके ताले एटी कोन हो आंसर बोथ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन consider following statements about economic reform economic liberalization in India began in 1981 with the introduction of export import policy 1991 LPG reform focused on liberalization privatization and globalization कोंदु एटा कोन समस्त कहबे लिखू ऑल करेक्ट प्रीति ओनली टू करेक्ट अमित ओनली बी ओनली टू करेक्ट ओके एनी मोर आंसर अन्य माने कल्पना नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच ओके बी 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 बहुत जन बी कहउछन बी माने टू ओनली देखिबा ताले कोन अछि चेक करिवा क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन कहउछि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगन इन 1981 इज इट ट्रू 1981 ने ये लिबरलाइजेशन स्टार्ट हितला कि रिसेंटली कहली you know not in 1981 rather it is 1991 when it started 1991 रे ये स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पार्ट ठीक अछि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में स्टार्ट हितला बिकॉज़ इट इज क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी रे कांसेप्ट आसे so 1991 LPG reform focused on liberalization privatization and globalization true or false LPG रो अर्थ कोन थिला ग्लोबलाइजेशन थिला कि नहीं ग्लोबलाइजेशन हैज टू हैंड्स डिस्कशन करथिली इट हैज टू आर्म कौन कौन ग्लोबलाइजेशन इट हैज टू आर्म्स कौन कौन गोटे हला लिबरलाइजेशन आ गोटे हला प्राइवेटाइजेशन गोटे हला लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अर्थ ट्रीटिंग द एंटायर ग्लोब एज सिंगल विलेज लिबरलाइजेशन अर्थ लिबरल इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन अर्थ प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्टेंस दबा कौन कहली यार अर्थ होची प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्टेंस दबा क्लियर पूछे गला ताले टू करेक्ट और फॉल्स 1991 ने एलपीजी आसिला ट्रू और फॉल्स एब्सोल्युटली ट्रू ठीक अछि ताले आंसर कोन हो आंसर हो टू ओनली कोन हला आंसर आंसर हला टू ओनली वन इज इनकरेक्ट with reference to sectoral composition which is correct over the decades the share of the primary sector in India's GDP has steadily declined the service sector is currently the largest contributor to India's GDP ये क्वेश्चन आंसर आई एक्सपेक्ट समस्त ठीक करिवे क्वेश्चन आंसर म भाबुची समस्त ठीक करिवे फैंटास्टिक बहुत बढ़िया share of primary sector in India's GDP steadily declined प्राइमरी सेक्टर शेयर डिक्लाइन होची कि नहीं कमुची कि नहीं मु गोटे ग्राफ देखैतिली जोटी एटा केते थिला 55% थिला आफ्टर इंडिपेंडेंस डिक्रीज हे केबे केते 16-17% 16-17% हे गलानी नहीं now एटा 1947 एटा 2025 now service sector is currently largest contributor किए सर्विस सेक्टर की नहीं फर्स्ट ऑप्शन रे कोन बोलेला हम बुझ पने फर्स्ट ऑप्शन ने कोन बोल हां
लिखु रामप्रिया प्रियदर्शी कौन लिखला I think the both statement accurately trained in Indian sector composite. Okay. ठीक अछि एटी देखो ओवर द डिकेट्स जीडीपी टा डिक्रीज होउची कोथरु प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होउची ठीक अछि सर्विस सेक्टर करंटली लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया's जीडीपी ठीक अछि कि नहीं बोथ आर करेक्ट ठीक अछि गरीबी हटाओ पॉवर्टी रिमूवल स्लोगन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोर्थ प्लान fifth plan emphasized income redistribution and poverty removal steadily decline बोली हाँ ये steadily decline है steadily ही decline है गरीबी हटाओटा केबे आसिला गरीबी हटाओ केबे आसिला समस्त कहिबे देखो जी जो दीटा अछि ना 1 and 2 दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर ठीक बन देखि देखो ठीक ध्यान देखि देखो एलिमिनेट केमति करा जाय क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल जो माने बोथ कहउछन से मानक पई एटी देखो एटी ये कहउछ गरीबी हटाओ फिफ्थ प्लान में आसिला सॉरी फोर्थ प्लान में आसिला सॉरी एटी आसिला फोर्थ प्लान लिखिला सेकंड पॉइंट देखो फिफ्थ प्लान एम्फासाइज इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉवर्टी रिमूवल अगेन पॉवर्टी रिमूवल बुझी होछ ना नहीं मो कथा 1 and 2 दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉट ये कहउछ फोर्थ प्लान सेम कथा एवं ये कहउछ केतना फिफ्थ प्लान ये कहउछ फोर्थ प्लान एवं ये कहउछ फिफ्थ प्लान मो कथा बुझी पारले ताले कोन आइदर 1 हबो नल 2 हबो दीटा ठीक हे परिबोनी केबे कोन आइदर 1 हबो नले 2 हबो कोन कल्पना एक्चुअली फिफ्थ प्लान ओके so actually कोन फिफ्थ प्लान actually fifth plan so fourth is not the correct option बुझेला ना बुझेला क्वेश्चन को आम जब केयरफुली पढ़ा ताहले भी ठीक करि परिबा अल्प जानी कि भी ठीक करि परिबा बट प्रॉब्लम होची हमें पढ़ुने केयरफुली नेक्स्ट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को incorporated in early 1990s making industrial advancement post independence the government promoted a heavy industry through public sector undertakings 2 question number 1 point number 1 and 2 which is correct which is correct both correct or incorrect कौन हम एटी both correct ठीक अछि both correct तापर गोटे conceptual question को आसी according to Keynesian model the remedy of unemployment is due to टिके एटा भाबी करियो एटा टिके भाबी करियो समस्त
इसको 1977 टिके चेक कर दो फैक्टर जदि किसी डिस्क्रिपेंसी आसे को टिके चेक कर दो ए क्वेश्चन टिके देखो 7 रु 11 ओके ये मॉडल टिके देखिए ये कुछ केन्सियन मॉडल अनुसार द रिमेडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टू अनएम्प्लॉयमेंट रो रिमेडी कौन ये क्वेश्चन टिके देखो क्विक रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड ओके सी लिकू बी कल्पना बी देखो ये कौन कहूँ केन्सियन मॉडल कहूँ जदि अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी ताले गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई दियो गोटे डिग वेल फिल वेल कॉन्सेप्ट ऊपर मध्य डिस्कशन करिथिली पूर्व तो कॉन्सेप्ट इज नॉट इंपोर्टेंट एई क्वेश्चन बट मैं भाबु समस्त मन थिबो तो एठी ये कहूँ जदि आम गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई दौचे लाइक मे बी थ्रू चीप मनी पॉलिसी मीन्स प्रोवाइडिंग लोन्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि दौचन ताहले एठी अनएम्प्लॉयमेंट को आम रिड्यूस करि परियो सो इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग कौन कहली इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग जदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई दौचे ताहले ऑटोमेटिकली कौन हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई देले ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट टा कमी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है जो बुझिएला हाउ एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाइबार किछि वे कहंतु मते गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाइबार किछि वे कहंतु मे बी थ्रू सोशल वेलफेयर स्कीम्स हां कि नहीं सस्मिता आउ किछि चीप मनी पॉलिसी कोन अमित चीप मनी पॉलिसी कोन लिखु मो कथा बुझी होछि सो एटी कोन हो आंसर होछि इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग यदि हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाई दउछि दिस इज द केन्सियन मॉडल नाउ ट्रेडिशनल मॉडल कोन कहउछि अनएम्प्लॉयमेंट पे ट्रेडिशनल मॉडल कहउछि कि लेबर फोर्स को रिड्यूस कर दे लेबर फोर्स को रिड्यूस कर दो क्लासिकल थ्योरी कहउछि कट दी वाइज लेख लिखि दियो एटी as per classical theory unemployment can be reduced by cutting the wage cut कर देले तुम अन्य मान को चाकरी दे पारिबो सेम पैसा रे बहुत जन को चाकरी दे पारिबो कल्पना सोशल एक्सपेंडिचर बुझिए गला नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म यूज्ड of immigration of highly skilled people from the developing country is called ठीक है ध्यान दे करिवे क्वेश्चन भूल हवार बहुत संभावना अछि जो 52 लेखा आइछि ठीक है मन दे करिवे भूल करिवार बहुत चांस अछि हिंट दे दूछु भूल करिवार बहुत चांस अछि ठीक है मन दे कि देखो तो चीप मनी पॉलिसी वेरी गुड अमित लास्ट क्वेश्चन आंसर चीप मनी पॉलिसी ठीक अछि तो एई क्वेश्चन ना दिके देखंतु एटी ब्रेन ड्रेन ठीक अछि बट ब्रेन ड्रेन टू आउ गोटे हाईली इकोनॉमिक श्योर ब्रेन ड्रेन ठीक अछि कल्पना ब्रेन ड्रेन टू एटी आउ गोटे हाईली इंपोर्टेंट टर्म यूज करा जायछि पॉइंट नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट ब्रेन ड्रेन तो हुए देयर इज अ ब्रेन ड्रेन आई एग्री नाउ एटी क्वेश्चन दोछि हाई स्किल्ड पीपल high those who are highly skilled they are migrating so that is called human capital flight not brain drain भी कहि परिबा but brain drain is of lower order human capital flight is of higher order ठीक है जी चलो 52 डी नेक्स्ट क्वेश्चन देख 52
बुझीगला सेत में हिंट देइतली कि ए क्वेश्चन में भूल हवार चांस अछि अधिक। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। When progress that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs is known as। गोटे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आज एथिक्स क्लास रे भी आ ऊपर डिस्कशन करिछ कि नहीं कोन थिले आज एथिक्स क्लास ऑप्शनल रे भी आको डिस्कशन करछि सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल क्लास रे भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हेछि सोशल इश्यू सोशल जस्टिस पढेला वाले डिस्कस हेछि सो मोस्टली मेंस रिलेटेड टॉपिक मु जहा भी पढै छी एमतरे भी मोर मेंस रिलेटेड टॉपिक ही मोस्टली SDG sustainable development goal very much thank you very much good 53A no discrepancy samaste agreed to point number A option A is the correct answer final option A final sure yes A is the correct answer it is all about sustainable development goals so sustainability means without compromising need of the future without compromising need of the future we are satisfying present generations need that's all now sustainable development goal ketata achi how many number of sustainable development goals how many number of sustainable development goals how many goals and how many target total 17 very good Preeti total number of goals jodi 17 target ketata target ketata 2030 target target year no total ta bhitar sub goal kete 169 yes it's looking for 169 next what a simple question देछि just to fool you अनेक गुडे इंपोर्टेंट कांसेप्ट कले डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत गुडे कले जस्ट गोटे सहज क्वेश्चन देछि एटा समस्त करिवे मु आंसर कहिबे एटा समस्त करिवे सी लिखु सी ओके सहज क्वेश्चन दा व्हाट आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल रिजर्व कॉल्ड फेडरल रिजर्व बैंक कॉल्ड फेडरल रिजर्व बैंक ता कहार अमेरिका लिखा है तो गिव जाय बोले फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका एंड आरबीआई ऑफ इंडिया एमन को कोन कहले बहुत सहज क्वेश्चन है किछि भी नहीं है क्वेश्चन कोन कह जाय this is a central bank right लिखु जोटा को सी फिस्कल पॉलिसी नाउ इज आरबीआई रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी मो क्वेश्चन होची आरबीआई इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी और इट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इज रिलेटेड टू फिस्कल और रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी को रिलेटेड को आरबीआई इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी फिस्कल गवर्नमेंट वेरी गुड सस्मिता Ministry of Finance, Government of India, but monetary policy is by RBI, Reserve Bank of India. Clear? Next question देखिए. Next question को आसीबा समझते. बहुत बढ़िया. If people with higher income pay higher percentage of income in taxes, then the income tax structure is called. Then this income tax structure is called कौन कहा जाएगा? This is called a progressive tax, mostly progressive. तामने इनकम बढ़िया सहित जदि टैक्स रेट बढ़े 50,000 इनकम 10%, 60,000 12%, 70,000 14%,
लक्षे टंका 15%। इनकम बढ़िया सहित टैक्स रेट बढ़िले ताकू प्रोग्रेसिव बोली कहा जाए। रिग्रेसिव ठीक उल्टा, जिते इनकम बढ़िया सहित टैक्स रेटा कमी कमी आसे, लक्षे टंकार 10%, 2 लाख टंकार 8%, 3 लाख टंकार 5%, दैट इज रिग्रेसिव। नाउ एक्साइज टैक्स बा एक्साइज ड्यूटी कहा पर लगे, सी ऑप्शन ला। डी ऑप्शन इज जीएसटी। जीएसटी इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। What is GST? GST is direct tax or indirect tax? GST is indirect, very good. Excise tax टा कहाँ पर लगे? Indirect, correct. Next question was here. To boost economic growth, the government is most likely to boost economic growth, the government is most likely to कौन करे गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑप्शन देखिबा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िबार अछि एमति भावन। बी, ओके ठीक अछि। मते कोन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िबार अछि इकोनॉमी रे, ताहले डिमांड बढ़िबा दरकार ना कमिबा दरकार? सिंपल कांसेप्ट कहूँ, समस्त ठीक करिवे। सुनंतु एबे, नाउ स्टॉप आंसरिंग, लिसन टू मी। क्वेश्चन होची इकोनॉमी रे हमको हमको भूल कही देली आंसर। चलो ठीक है, मते कहबे इकोनॉमी रे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को हमें बूस्ट करबा को चाहूचे हैला, ताहले मते डिमांड बढ़ाइबार अछि ना डिमांड कमाइबार अछि? सिंपल, डिमांड बढ़ाइबार अछि ना डिमांड कमाइबार अछि? जदि इकोनॉमी रे मु ग्रोथ बूस्ट करिवि ताहले डिमांड इंक्रीज, डिमांड बढ़िया दरकार। एग्रीड समस्त प्रति डिमांड बढ़िया दरकार कहला, अन्य माने एग्रीड कि हां सर डिमांड बढ़िया दरकार, समस्त राजी तो डिमांड बढ़िया दरकार। अच्छा, जदि डिमांड बढ़िया दरकार, मो डिमांड केते बेले बढ़िबो जेतोले टैक्स मो ऊपर बढ़ी जीवो ना टैक्स कमी जीवो? मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इकोनॉमी रे डिमांड केते बेले बढ़ी जीवो जेतोले मो टैक्स ता बढ़ी जीवो, मो ऊपर अधिक टैक्स ना जेतोले मो ऊपर कम टैक्स? टिके ब्रेनस्टॉर्मिंग बा स्लाइटली ब्रेनस्टॉर्मिंग, अधिक नहीं। टैक्स कमी गले, टैक्स कमी गले सस्मिता, टैक्स कमी गले प्रीति भी कहूछ कमी गले, ताले टिके आंसर टा देखिले लो टैक्स लिखो। ओके ठीक अछि, मु भी राजी, आई एग्री, एग्री टू योर आंसर। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? ए बी सी डी भीतर, ए बी सी डी भीतर आंसर कोन हो? बुझी हला समस्त को? डी इज द करेक्ट आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। कोन हो ताले आंसर? आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिला, केते छोटो क्वेश्चन डे बट केते कांसेप्ट अछि ता भीतर। एबडा एटा होची एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देछि किछ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, द नोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, द नोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, notion of economic growth is देखो unrelated to concept of development, similar to concept of development, narrow than concept of development, wider than development. So this is simply a question between economic growth and economic development. This is a question of difference between economic growth and economic development. कौन करिया ये क्वेश्चन आंसर? समस्त कहबे और समस्त ठीक भी हो।
growth growth is quantitative only, yes or no? ମୁଁ କହିବି କି last year ମୋ income ଥିଲା 50,000, a year 55,000, so there is a growth. Development consists of three factors: standard of living, health and education. कौन कहली? standard of living, health and education. Now to generate standard of living, what you need is, you need money. So what is money? Money is simply growth. What is money? Money is growth. हाँ कि नहीं? So to achieve economic development, first you need economic growth, then you can achieve economic development. कौन कहली? प्रथमे आपन को economic growth दरकार, तापर आपन economic development achieve करि परिबे. ताले growth is narrow or development is narrow? कोन? So growth is quantitative only, but development is both quantitative and qualitative. Development is both. Development is quantitative and development is qualitative, both. कौन होता है? Which is narrow, growth or development? Growth is a subset of development. हाँ कि नहीं? Growth is a subset of development. इटा growth, इटा development. कहना development with आउ तीन टा जिनस अछि. कौन कौन? Health, और education. हेला ए वेन डायग्राम टा कर दियो. Growth, तार भीतर health, education, तापर superset हैला कि development. एवढा सब subset. Next, growth rate of an economy clearly depends upon, growth rate टा कहाँ ऊपर, गोटे economy रा growth rate कहाँ ऊपर depend करे? Growth rate chiefly depends upon rate of growth of labor force, rate of technological improvements, proportion of national income saved and invested. कौन लिखलो? सस्मिता. National income, okay. Kalpana D, okay. Priti, all of this, okay. ना देखलो ये चारिटा जाक कथा कौन कहली? ये चारिटा जाक कथा ग्रोथ तीनटा जाक जा जो ऑप्शन ए बी सी तीनटा जाक ग्रोथ नुहे कि? तीनटा जाक ग्रोथ नुहे कि? So what is the correct answer then? Correct answer is D. Next, first 5-year plan of India, it was based on which model? यहाँ पर हमें गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी कर सारचे. फर्स्ट प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? यहाँ पर गोटे क्वेश्चन हमें ऑलरेडी कर सारचे. हरोदमान मॉडल ठीक है. सेकंड टा थिला, सेकंड टा भी ठीक थिला समस्त. सेकंड टा भी हम कर देथिले ना ये क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन एज पार्ट ऑफ द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? व्हिच इज नॉट देयर इन HDI?
सी समस्त सी कहते infant mortality is not there बहुत सहज क्वेश्चन कुछ भी नहीं नेक्स्ट number of deaths of children under 1 year per 1000 live birth is called चाइल्ड मोर्टालिटी रेट नियोनेटल टॉडलर मोर्टालिटी इन्फेंट मोर्टालिटी कौन हो तो सहज क्वेश्चन किसी भी नहीं है बारंबार यूज हुए टर्म आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नुहे कि आईएमआर आ गोटे एमएमआर एथरे कौन अछि नेक्स्ट द मेजर ऑफ वर्कर्स रियल वेज इज नॉट चाइल्ड मोर्टालिटी दिस इज इन्फेंट मोर्टालिटी आईएमआर एंड एमएमआर देखो 62 एटा भी समस्त ठीक करियो real wage is defined as real wage is defined as कोथरे हबो purchasing power of his earning केति किनुचे आमे जेमति purchasing power parity आमे कंपेयर करथिले आमे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को एडिशन नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय economic development is categorized by structural change in the economy, change in the occupational structure, or both. Priyadarsini D. Okay. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन देखा है एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन देखा है डेवलपमेंट देखो स्ट्रक्चरल चेंज कौन कालीर क्लास रे मु कहितली सो प्राइमरी एवं सेकेंडरी सेक्टर रु टर्शियरी सेक्टर को जंप करवाटा स्ट्रक्चरल चेंज बा ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रे चेंज होउची एटी कैन मोर द पीपल एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर मोर द इकोनॉमी इज कॉल्ड टू बी डेवलप्ड नहीं अर्बन एरिया भी सेम अर्बन एरिया रा डेफिनेशन मध्ये सेम थिला नहीं अर्बन एरिया रा डेफिनेशन मध्ये सेम थिला नेक्स्ट रियल नेशनल इनकम denotes real national income denotes गोटे सिंपल क्वेश्चन समस्त करेंगे सो एटी क्वेश्चन समस्त जानि सारछन कि नॉट पी आउट डी एलिमिनेशन जदि हमें करबा
जदि एलिमिनेशन करबा ताले प्रथम काहा को एलिमिनेट करदो बी आउ डी को फास्ट एलिमिनेट करदो काहा को बी आउ डी को पर कैपिटा इनकम रो कथा उठुनी बा नेट फैक्टर इनकम रो कथा उठुनी ताले नेशनल इनकम एट आइदर नेशनल एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस भीतर गोटे कथा आइदर एट कांस्टेंट और एट करंट प्राइस एती कथा हैला ना फैक्टर कॉस्ट हबनी बा कोई से constant price or current price, which is important? Constant price is important so that you can know the rate of inflation. देखो छोट छोट क्वेश्चन बट केते कॉन्सेप्चुअल जीके रे 0 यस यू कैन स्टार्ट तो कले किछि हुए ना कोआ जाय कोन अमित जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप तुम स्टार्ट कले तो किछि पाइबो न कले केमति पाइबो हां कि नहीं स्टार्ट तो कर प्रथमे the answer is A. Next, an underdeveloped economy is characterized by high per capita real income, depth of deprivation of large proportion of population, large proportion of labor force is in the tertiary sector, or all of this. अमित कहते कि स्पेशल रिक्वेस्ट गोटे ओसीएस रोड मैप रो वीडियो आनंदु ऑलरेडी अच्छी रोड मैप रो वीडियो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच ठीक अच्छे आउ गोटे वीडियो नहीं आसी डोंट वरी prelims to interview all planning especially for those who qualified recently those who graduated recent graduate मानक पय आनी ठीक अच्छे recent graduate मानक पय नहीं आसी गोटे वीडियो डोंट वरी 65 देखो हाई पर कैपिटा रियल इनकम केबे हबो कि हबोनी state of deprivation of large proportion of population na large proportion of labor force in which sector in the tertiary sector what answer is 65 answer is B what is the correct answer B हैला कहीं की tertiary होबनी ना because they are involved in primary sector not in tertiary. Next, scarcity of capital, technology and backwardness and unemployment are usually found in which type of countries? এটা भी समस्त करि परबे ये क्वेश्चन किछि नाही ये क्वेश्चन समस्त करि परबे हां कि नहीं this is characteristics of underdeveloped economy. Next, fiscal deficit in the union budget means what is the meaning of fiscal deficit in the union budget? What is the meaning of fiscal deficit in the union budget? देखो कौन हो फिस्कल डेफिसिट टोटल रेवेन्यू एवं टोटल एक्सपेंडिचर भितर डिफरेंस टा को जाय फिस्कल डेफिसिट नहीं कि सी आसी आंसर
केमिति आसीबो मे भी टिके डिफिकल्ट लागि पारे बुझिया मु बजेट पढिला बेले सेटा आउट डिस्कस करी बजेट क्लास रे मु डिस्कस करियो चला आउट क्वेश्चन कैपिटल फॉर्मेशन इज अंडर इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज इट इज अ मेजर bottleneck the reason is capital formation by what is the reason low capital formation what is the reason नहीं only एठी हबो कोन a low level of income only कोन हबो only हबो a low level of income other factor गुडा का आसीबेनी अस्मिता d no demonstration effect ओनली ए ठीक अच्छे ताले बुझीला आज क्लास में जी कनसेप्ट डिस्कस कले ना बुझीलानी मत कौन बुझीला कि बुझीलानी कौन तो पुणी नेक्स्ट क्लास रे आम आउ कुछ इंपोर्टेंट कनसेप्ट डिस्कस करिया आज आम इवोल्यूशन ऊपर देखिले इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऊपर देखिले काली के आउ किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखा नेक्स्ट क्लास रे काली तो क्लास नाही कोनोसी भी क्लास नाही काली अगेन विल रियूनाइट ऑन ट्यूसडे रो पुणी मो क्लास है मंडे नाही क्लास ट्यूसडे विल अगेन रियूनाइट ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच गुड नाइट एवरीवन